Hello, everyone, and welcome back to another session on the reading comprehensions. Now, today's reading comprehension is coming from the domain of law, it is coming from the domain of technology, a little bit about the society, cybercrime regulations, policy. So, a topic and a subject that is very known to most of us and is something that is very central to our lives together. So, let us get down to understand what the passage is all about and let us get going. Both the social science and technological paradigms. Now, what do we mean by the term paradigm? पैराडाइम एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं जब हमने इस चीज के बारे में बात करना होता है कि एक तो होता है जब हम पैराडाइम को एज अ वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है जब हम किसी एक सेट पैटर्न के बारे में कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में यानी कि जब हम किसी एक एग्जेम्पलरी चीज के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं टिपिकल जो कोई एग्जाम्पल होता है या जब हम इस चीज के बारे में बोलते हैं अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं when we are talking about a set of all the different forms of a word as to how a word is used in very different forms. But the general meaning of the word paradigm is when something is a perfect example of something, a typical example basically, right? So both the social science and technological paradigms appear to have their problematic existence and tendencies. The social science paradigm tends to emphasize policy reform, lawmaking, law enforcement, and its main locus and focus, thereby concentrating on preventing the occurrence of crime that have already been committed or existed. It tends to solve the signs and symptoms of the crime but not uproot its causes. So basically, what are we talking about here when we are talking about the social science? That the social science will identify the symptoms. Uh, it would also probably tend to solve the signs and symptoms of the crime, but somehow it does not have the potential to uproot the causes. The technological paradigm, on the other hand, places more emphasis on technological and innovative dimensions as its main thesis, as a way of solving the riddle of what is a riddle? Riddle is a puzzle, a riddle of cybercrime, which necessarily prevents the occurrence of crime which has not yet existed. तो ये काम क्या करता है? जो चीज एग्जिस्ट नहीं हुई है अभी उसको थ्वॉट करने का काम करता है थ्वॉट मतलब एज एन ऑब्स्टिकल का काम करता है It detects solutions to the causes of cybercrime without diagnosing its symptoms. The hurling challenge, therefore, is to first bridge the common differences underlying between causes and effects, the antecedents, यानी कि जो उसके बाद में होंगे, and the consequences and the causes and symptoms of cybercrime, specifically that of free speech, free expression, and free press doctrine, and the behavior exhibited that goes along with it with that of the laws and policies which regulates it. The blurred distinctions between what is good or bad may be eradicated by first identifying and defining cyber criminal behavior and actions that constitute cybercrime with utmost consideration and respect to the constitutional rights, liberties, and freedom of cyber individual and citizens. So basically, what are we talking about? In these 8 to 10 lines, we are first talking about the social science paradigm. सोशल साइंस पैराडाइम क्या बोलता है वो पॉलिसी मेकिंग पे रिफॉर्म पे लॉ मेकिंग पे लॉ एनफोर्समेंट पे फोकस करता है what is the social science paradigm trying to do it is concentrating on addressing and preventing crimes जो कि ऑलरेडी आकर हो चुके हैं राइट जो कि ऑथर भी इस चीज के बारे में बोल रहा है कि दे टेंड टू सॉल्व द विजिबल साइंस बट somehow they lack the potential of uprooting it. On the contrary, when you talk about the technological paradigm, इस अप्रोच के बारे में क्या बताया गया कि ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड इनोवेशंस ढूंढता है साइबर क्राइम को सॉल्व करने के लिए ये फोकस कर रहा है ऑन प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइम्स ऊपर वाला क्या कर रहा था इट वाज कॉन्सेंट्रेटिंग बेसिकली ऑन प्रिवेंटिंग द क्राइम्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं और ये क्या कर रहा है टेक्नोलॉजिकल ये फ्यूचर क्राइम्स को जो है प्रिवेंट कर रहा है thereby what is it trying to target the structural causes of cybercrime. And kahin na kahin, we've been told that it often does so without diagnosing the immediate symptoms. Furthermore, we must not lose sight of the fact that individual users should and do take responsibility for their actions, and rather controversially, in the light of some security reports, the internet is remarkably ordered if you consider the sheer number of users and the volume of transaction that takes place on it.
This is conveying a very important part. What is the important part? That individually all of us should feel responsible, because we are talking about internet and technology, specifically internet as a part of technology, to be a very, very humongous kind of a domain, जहां पे एक साथ पे इतने सारे यूजर्स जो हैं काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस प्लेस कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली कुछ तो पोटेंशियल होगा इंटरनेट में. Second, through the empowerment and strengthening process of democratizing the participation of stakeholders between and among the social science and technological paradigm to consult further, deliberate, discuss, and consolidate their varied interpretations and applications on cybercrime, prevention with a paramount goal to share a common language and vision on how to regulate cybercrime. So there has to be some sort of a coordination and participation among the social science and technological paradigm, ताकि वो लोग किसी ना किसी तरीके से एक कॉमन गोल, एक कॉमन लैंग्वेज और एक कॉमन विजन शेयर करें, ताकि साइबर क्राइम को वो रेगुलेट कर पाए. Several stakeholders are concerned with the control of cybercrime, and each has its perspective and preferences. For successful control, they all must cooperate and share the necessary responsibilities. Third, discovering and recognizing that the symptoms of cybercrime do exist and reversibly provide a strong linkage with its causes, in finding the coherent structure, system, processes, and policies which may be promulgated, that is, spread, and enforced in solving cybercrime. Another reasonable prediction would be that the internet will become not only the number one means of communicating, conducting business, socializing, entertaining, and just living, but indeed will handle a huge majority of such interactions. Thus, failure to establish and enforce some basic ground rules will likely lead to socioeconomic disaster. So basically, what are we talking about here? We are talking about some sort of anticipated actions जो कि लिए जा सकते हैं. सबसे पहला एक्शन जो है किसके पार्ट पे होगा? इंडिविजुअल यूजर के पार्ट पे. दूसरा क्या होगा कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम के, they all have to work cohesively in the field of cybercrime so as to regulate a couple of things. They must have a common goal to share, a common language, and a common vision. Third, and most importantly, we are talking about discovering and recognizing the symptoms of cybercrime. And somewhere we are also talking about the fact कि इवेंचुअली जो आपका इंटरनेट है या साइबर स्पेस है वो इतना ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा दैट इट इज गोइंग टू हैंडल अ मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस. एंड अगर कोई बेसिक रूल्स नहीं होंगे टू मैनेज ऑल दीज प्रिडिक्शंस on the internet, then ultimately this is going to lead to some sort of a socio-economic disaster. As new communication technologies continue to develop novel, that is, new ways, novel means new, ways of exploiting such technologies for nefarious, that is, unfriendly purposes will undoubtedly develop. अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करोगे जो कि काउंटरैक्ट करे जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, टेक्नोलॉजी को जिस वे से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट? सो आप इंटरनेट का या टेक्नोलॉजी का एक नेफेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे. It is the responsibility of the relevant social systems to keep pace with those that use electronic mediums, particularly computers, cyberspace, and cellular phone, to victimize others by successfully preventing or responding to such instances. So, social control system का काम क्या होना चाहिए? It should keep pace with जितने भी आपके न्यू फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहे हैं, ताकि अगर आप किसी को विक्टिमाइज करने की कोशिश भी करो तो वो इमीडिएटली जो है थ्वॉट हो जाए, उसको आप रोक सके. So that is what the whole of the passage is talking about. Majorly, we are talking about two types of paradigms, right? And somewhere after that, what are we talking about? We are talking about in the passage as to how there should be a couple of regulations that must be there, how the challenges can be overcome, right? And how the space of cybercrime can eventually be regulated. Not a very difficult passage in terms of the concept to understand. Let us see what the questions have to offer. According to the passage, question number 1, according to the passage, why does the author argue that failing to establish basic ground rules for internet interactions could lead to socio-economic disaster? अब उसने कैटेगोरिकली हम लोगों को एक चीज बताई है कि
अगर ग्राउंड रूल्स नहीं होंगे तो साइबर क्राइम एंड नेगेटिविटी जो है नेफेरियस एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होगी। इवेंचुअली ये बहुत ज्यादा फैल जाएगी। एंड उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आप इंटरनेट पे इतना ज्यादा काम करोगे आने वाले टाइम में, दैट स्पेस इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय बिजनेस एक्टिविटीज, इट इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय the societal uh, functions, communication, businesses, socializing, entertainment, everything, and majority of the daily interactions are going to take place online. तो अगर कोई ग्राउंड रूल्स नहीं होंगे तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस में से कहीं ना कोई इशू निकलेगा ही निकलेगा, जो कि एक सोशो इकोनॉमिक डिजास्टर का काम करेगा। ए बोलता है, द ऑथर इज कंसर्न्ड that without ground rules, the internet will become an anarchic space. We are not talking about anarchy. Anarchic space का मतलब क्या है? Lawless हो जाएगा, potentially stifling technological advancement. It is not going to stifle the advancement. We are talking about the fact that it is going to become an unsafe space. The author posits, that is, presents that the absence of ground rules may heighten vulnerability to exploitation and cybercrime, negatively impacting individuals, businesses, and society due to our increasing dependence. This is going to be the correct answer. We have been very categorically told here कि क्योंकि इंटरनेट जो है इट इज गोइंग टू बिकम द नंबर वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, कंडक्टिंग बिजनेस, सोशलाइजिंग, एंटरटेनिंग एंड जस्ट प्लेन लिविंग व्हेन यू टॉक अबाउट। तो अगर ये सारे स्पेस पे कोई ग्राउंड रूल्स नहीं होंगे, सो वी कैन इमेजिन के क्या होगा, राइट? क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट उस पर हो जाएंगे, सो देयर हैव टू बी सम ग्राउंड रूल्स बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज गोइंग टू बी डन ऑनलाइन। The author suggests that without ground rules, there is a potential to exacerbate, that is, worsen the digital divide. Digital divide के worsening की हमने कहीं पे भी बात नहीं की है। The author fears that without ground rules, there would be an increase in online censorship and surveillance. अगर surveillance होगा, censorship होगा, तो कभी भी potential problem आपकी आएगी ही नहीं। So the correct answer is going to be option number B. Which one of the following, if it were to be true, is the author likely not to endorse? Which of the following, basically, in other words, the author would probably not support? Increasing funding and resources for research and development in cyberspace to anticipate and respond to novel forms of cybercrime. इसके बारे में हम लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप होनी चाहिए कि अगर कोई भी हम न्यू टाइप की या नेफेरियस टाइप की एक्टिविटी को फर्दर करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस हों। So he would endorse this. Establishing laws and regulations that are adaptable and flexible, allowing them to evolve with new communication technologies. इसके बारे में भी ऑथर ने बोला है, तो ये भी नॉट लाइकली टू एंडोर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्लियरली बताया गया है कि ऑथर किस चीज के बारे में बोल रहा है कि जो भी हमारे फर्दर एक्शंस होंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। देयर हैज टू बी अ कॉमन लैंग्वेज, देयर हैज टू बी अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स टू रेगुलेट द साइबर क्राइम एंड टू नेसेसिटेट any sort of an action which might victimize people around. Proposing that technology users bear the primary responsibility for the cybersecurity by regulating, updating their systems, and practicing safe internet use. He would, so the correct answer here would be option number C, क्योंकि वो कहीं पे भी इस चीज को एंडोर्स नहीं करेगा। उसने ये चीज बोला है कि हाँ, लोगों को they should feel responsible, but he is not stating and he is not endorsing this particular point कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों की है। वो ऑथर क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं, इंडिविजुअल यूजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल थीसिस उसकी आर्ग्यूमेंट का क्या है कि जो भी हमारा साइबर क्राइम है उसको टैकल करना हैज टू बी अ शेयर्ड एफर्ट, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, राइट? So the correct answer for this particular question has to be option number C. Prioritizing education and awareness initiatives to help the general public understand the potential cyber threats and how to protect themselves. ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी उसने एंडोर्स किया है, whereby he is talking about the fact that people should be aware of the space in which they are working. So the correct answer for question number 2 is option number C. The hurling challenge, therefore, is to first bridge the common differences underlying between causes and effects, the antecedent and consequences, and the causes and symptoms of a cybercrime. Which of the following best captures the essence of this sentence?
अब यहाँ पे हम बात किस चीज की करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें गैप जो है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको कम करना है। सो इसका मतलब जो भी हमारे अपोजिंग व्यूज हैं, हमें उनको रिकंसाइल करना है। वी हैव टू इरेडिकेट द सिस्टमिक डिस्पैरिटीज, एंड वी समहाउ हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ साइबर क्राइम एंड हाउ कैन वी मैनेज इट्स आउटकम्स। क्योंकि एक जो है, जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं उसके बारे में बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि फ्यूचर में वो जो टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम है, ये प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो। तो दोनों के जो भी डिफरेंसेस हैं उसको रिकंसाइल करके वी हैव टू फिगर आउट द करेक्ट सोल्यूशन। If we look at option number A, if we need to get meaningful solutions to address cybercrime, we need to understand the motivation that led to the act. We are not talking about what led to the act of cybercrime. We are talking about the fact कि जो भी opposing ideas हैं उसको resolve करके एक consensus होना चाहिए कि आपने किस तरह से इस problem को tackle करना है. The disparities between underlying factors that contribute to the occurrence and consequences, क्योंकि antecedent and consequence बोला है, of the cybercrime needs to be reconciled. This is going to be the correct answer. That is option number B. The cause and effect of cybercrime can be identified as the doctrine of free speech behavior of individuals, respectively. We know we're talking about free speech. With regards to this particular point, cybercrime typically results from the interplay between free speech, free expression, free press doctrine, and legal framework. So basically, these are all the modalities that are affiliated with the cybercrime. या साइबर स्पेस में किस तरह से हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारे को एक एम्पावरमेंट मिलती है साइबर स्पेस में, राइट? तो इसका इस पर्टिकुलर लाइन के साथ जो है कैप्चर करने का कुछ लेना देना नहीं है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. Coming to the last question of the passage. Second, through the empowerment and strengthening process of democratizing the participation of stakeholders between and among social science and technological paradigm to consult further, deliberate, discuss, and consolidate their varied interpretations and applications on cybercrime prevention with a paramount, that is the peak, जिसको हम बोलते हैं, most important goal, to share a common language and vision on how to regulate cybercrime. Each of the following regarding the excerpt can be inferred as true except. अब यहाँ पे हम लोगों को किस चीज के बारे में बोला है? एक्सेप्ट क्या आउटलाइन करता है कि स्टेक होल्डर का जो एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो एक वाइटल मैकेनिज्म है, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, यू कैन शेयर अ कॉमन लैंग्वेज एंड विजन. हालांकि it promotes this method, right? But the author does not make extreme assumption that every potential solution outside the stakeholder participation कि वो guaranteed है कि वो ineffective होगा ही होगा. तो हमें ऐसा वाला कोई point ढूंढना है. तो A बोलता है it assumes that stakeholders are willing to engage. Yes, they are. हम इसको infer कर सकते हैं. क्यों infer कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं strengthening process में हम लोगों को stakeholder का बताया है, and where we have been told that it has to be an amalgamated effect. तो ए तो इन्फ्रेंस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. इट अज्यूम्स दैट स्टेक होल्डर्स हैव डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साइबर क्राइम प्रिवेंशन. ये भी हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि हम लोगों को क्लियरली ये चीज बता रखा है कि जो आपका स्टेक होल्डर है, दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द कंट्रोल ऑफ साइबर क्राइम, एंड उनको कहीं ना कहीं हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव एंड प्रेफरेंसेस हैं. तो अगर हमें एक मायरियाड पर्सपेक्टिव और प्रेफरेंसेस मिले तो हम कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल कंट्रोल ला सकते हैं. तो हम इसको भी इन्फर कर सकते हैं. इट assumes that there exists at least some plausible shared vision of how to regulate cybercrime. बोला है ये भी क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव बीन टोल्ड कि ये सारे के सारे जो हैं कोऑपरेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं या इनको करना चाहिए. And majority of the stakeholders are concerned with the control of cybercrime, right? कि साइबर स्पेस को किस तरह से इन लोगों ने कंट्रोल करना है. तो ये भी कहीं ना कहीं लॉजिक हमारी पता चलती है. इट अज्यूम्स दैट अदर सॉल्यूशंस than stakeholder participation will likely be ineffective. Look at this strong word. Ineffectiveness को हम कहीं से भी जो है इन्फर कर ही नहीं सकते. उसने ये जरूर बोला है कि हाँ, they are trying to do their best और they have the potential to do their best. ये कहीं नहीं बोला है that all this is going to be ineffective in handling cybercrime. So the correct answer for this question is going to be option number D. Now, this is a typical passage whereby some sort of a known information is given, factual information is given. Question types were pretty direct.
answers were also pretty direct. It wasn't a very, very difficult kind of a passage. Since such topics are doable, concept is very easy to understand, and majority of us are aware about the whole concept and situation of cybercrime, one must always try to attempt such passages in the exam. So keep reading, and until next time, I'll see you again. And also, don't forget to keep practicing your daily reading comprehensions, because they are going to really aid in your categorical understanding of the text, of the domain of the passage. At the same time, a regular practice of the reading comprehensions would help you understand the typical loops that are set by the examiners in the exams. So I'll see you in the next passage in some other interesting session. Till then, take care.